Epidemiological or research studies. Today we are going to discuss experimental or interventional study. Classification, just a quick recap, descriptive designs and analytical designs. Descriptive designs are of four types: case report, case series, cross-sectional, and correlational. Analytical studies are divided into observational and experimental. Observational studies are of two types: case control and cohort. Cohort is further dichotomized into prospective cohort study and retrospective cohort study. Now, experimental or interventional studies are of two types: randomized controlled clinical trials, also known as RCCTs, or clinical trials or drug trials. Randomized controlled field trials, also known as RCFTs, or vaccination trial or some preventive measure trial. RCCT क्या होता है? These are therapeutic trials which are done in sick patients. First of all, there is a preclinical phase जिसमें animal studies conduct की जाती हैं. उसके बाद it enters the phase 1 trial जिसमें research participants 20 to 80 होते हैं. Followed by phase 2 trial in which the participants are between 100 to 300. Then phase 3 trial, participants are between 1000 to 3000. And then the drug is submitted for approval to the relevant approving authorities. And after confirmation of the safety and effectiveness of the drug, it enters the phase 4 trial जिसमें 1000 plus participants होते हैं. और उसके बाद उसकी मास प्रोडक्शन शुरू होती है, followed by post marketing surveillance. RCFTs जो field trials हैं, these are also known as preventive trials and are done in well communities and apparently healthy people. Again, जो preventive trials होते हैं to evaluate या to test preventive measures such as vaccine, उनकी development के लिए normally 10 to 15 years required होते हैं. सबसे पहले एक exploratory और preclinical phase होता है जिसमें इस new vaccine को test किया जाता है animals के अंदर. And then फिर human trial start होता है जिसमें phase 1 trial 2 to 3 years में complete होता है, followed by phase 2 trial which takes another 2 to 3 years, phase 3 again 2 to 3 years, and then the vaccine is submitted for approval to the relevant authorities. And after confirming the efficacy and the safety of the vaccine, then mass production started with post-marketing surveillance, which again takes 1 to 2 years. So, एक normally एक vaccine को develop करने से लेके consumer तक पहुंचने तक around 10 to 15 years लगते हैं. Experimental और interventional design में again association देखी जाती है between the predictor variable and the outcome variable. Predictor या जो independent variable होता है वो एक exposure होता है in the form of experiment or intervention. जो experiment है वो एक experimental drug भी हो सकता है, एक experimental vaccine भी हो सकती है, या फिर एक experimental procedure भी हो सकता है. And then जब आप intervention complete करते हैं तो फिर it is followed to see the outcome कि outcome क्या निकला. Outcome usually disease होती है जिसकी improvement को देखा जाता है कि आया disease में कोई improvement आई या नहीं आई, या complications का rate कम हुआ है या नहीं हुआ, या से survival बेहतर हुआ है उस disease में या नहीं हुआ है, या कोई वैक्सीन है उससे डिजीज रिस्क कम हुआ है या नहीं हुआ. सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है RCCT और RCFT का? कि
जो भी आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यू डिफाइन आइदर द सिक और द वेल पॉपुलेशन, और फिर उस पॉपुलेशन को रैंडमली असाइन किया जाता है इनटू टू ग्रुप्स। वन इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें न्यू थेरेपी या कोई न्यू प्रिवेंटिव इंटरवेंशन या प्रोसीजर को यूज किया जाता है, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें या तो स्टैंडर्ड थेरेपी दी जाती है या कोई प्रिवेंटिव इंटरवेंशन या प्लेसीबो दिया जाता है। प्लेसीबो क्या होता है? इट्स एन इनर्ट सब्सटेंस that looks, smells and tastes like the experimental drug। वो लोग जो कंट्रोल ग्रुप में होते हैं उनको ये नहीं पता चलता कि उन्हें एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया गया है या प्लेसीबो दिया गया है। फिर दोनों ग्रुप्स के अंदर देखा जाता है कि उस डिजीज के अगेंस्ट इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई इम्प्रूवमेंट। सो स्कीम क्या है RCCT एंड RCFT की? आफ्टर टेकिंग informed consent from the study participants, the participants are randomly assembled into two groups, experimental group and the control group। इन दोनों ग्रुप्स के अंदर baseline measurements ली जाती हैं in the form of say radiological examinations such as X-ray chest किया जा सकता है, MRI किया जा सकता है, या फिर ECG चेंजेस देखे जा सकते हैं बेसलाइन मेजर रखने के लिए, या फिर लेबोरेटरी इंडिकेटर्स देखे जा सकते हैं जैसे सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, सीरम हीमोग्लोबिन लेवल्स के बेसलाइन क्या है। उसके बाद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज गिवन द एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन विच कुड बी अ न्यू ड्रग और अ प्रिवेंटिव मेजर सच एज अ वैक्सीन और अ न्यू प्रोसीजर। और जो कंट्रोल ग्रुप है उसे प्लेसीबो और अदर नॉन एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन दी जाती है या स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पे रखा जाता है। दोनों ग्रुप्स के अंदर यू चेक फॉर द आउटकम, आउटकम को देखा जाता है। से फॉर एग्जांपल एक डिजीज के अगेंस्ट अगर कोई ड्रग दी गई तो ये देखा जा सकता है कि जी इम्प्रूवमेंट आई या इम्प्रूवमेंट नहीं आई। दोनों ग्रुप्स के अंदर, बोथ इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड इन द कंट्रोल ग्रुप। This is the example for RCCT। Say for example, अगर after taking informed consent from study participants, say HIV patients थे, that is sick patients, और उनको फिर randomly assign किया गया दो ग्रुप्स में, experimental group और कंट्रोल ग्रुप में। बेसलाइन मेजर लिम्फोसाइट काउंट था दोनों ग्रुप्स में। देन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक न्यू एंटीवायरल ड्रग दिया गया फॉर HIV एंड एंड द कंट्रोल ग्रुप में प्लेसीबो या स्टैंडर्ड ड्रग दिया गया, से फॉर एग्जांपल एजिडोथाइमिडीन व्हिच इज एन एंटीरेट्रोवायरल ड्रग यूज्ड फॉर HIV पेशेंट्स। दोनों ग्रुप्स में ओवर टाइम मेजर किया गया आउटकम में, और आउटकम क्या था? इम्प्रूव लिम्फोसाइट काउंट or no improvement in the lymphocyte count in both the groups, that is both the experimental group and the control group। Another example, after taking informed consent from study participants, say participants myocardial infarction के patients थे, randomly इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, experimental group and the control group। बेसलाइन मेजर था नो करंट ECG चेंजेस। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को लो डोज एस्प्रिन दी गई ताकि उसका इफेक्ट देखा जा सके ऑन फर्दर इस्कीमिक अटैक्स। जो कंट्रोल ग्रुप है उसे प्लेसीबो एडमिनिस्टर की गई। ओवर टाइम आउटकम मेजर किया गया, और आउटकम क्या था? नंबर हु रिमेन फ्री ऑफ फर्दर इस्कीमिक अटैक्स and the number showing ischemic changes। Again for both the groups, experimental group और control group में ये outcome देखा गया। Scheme for RCFT। RCFT जैसे कहा है कि apparently healthy individuals और communities में की जाती है। So
select two well communities or apparently healthy communities, उनको randomly आपने दो groups में assign किया से community वन जो है वो से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आती है और कम्युनिटी टू कंट्रोल ग्रुप को असाइन होती है. सो इन कम्युनिटी वन आपने देखा नो एविडेंस ऑफ पोलियो इन लेस देन 5 years old, और फिर कंट्रोल ग्रुप में भी देखा कि नो एविडेंस ऑफ पोलियो इन लेस देन 5 years old. बेस लाइन मेजर था. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को से एक न्यू वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है उसे प्लेसिबो वैक्सीन दी गई. और इन दोनों ग्रुप्स में मेजर किया गया आउटकम जो था नंबर हु रिमेन फ्री ऑफ पोलियो से आफ्टर 5 years of follow-up and the number who contracted polio in 5 years of follow-up in both the groups, that is the experimental group and the control group. स्ट्रेंथ्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होती हैं? एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा रोबस्ट डिज़ाइन है एज कंपेयर टू ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइंस एंड द डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइंस. व्हाई इट इज़ कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड? बिकॉज जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है इनमें रैंडमाइजेशन होती है, कंपैरिजन होता है, इंटरवेंशन होती है और ब्लाइंडिंग होती है. रैंडमाइजेशन का क्या मतलब है कि रैंडमली असाइन किया जाता है पार्टिसिपेंट्स को इनटू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड इन द कंट्रोल ग्रुप. ये जो रैंडमाइजेशन होती है इसका पर्पस ये होता है कि ऑन एवरेज द कंफाउंडिंग factors are equally divided into the control group and the experimental group. So randomization का purpose ये होता है. Randomization के मुख्तलिफ तरीके हैं. Basic तरीका जो है वो simple random allocation है by tossing the coin or the lottery method or by the use of the table of random numbers which is computer generated. दूसरे एडवांस प्रोसीजर्स भी होते हैं रैंडमाइजेशन के, से फॉर एग्जांपल रैंडमाइजेशन इन टू ग्रुप्स और सिस्टमैटिक एलोकेशन और स्ट्रेटिफाइड एलोकेशंस जो अंडरग्रेड के ऊपर नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर रैंडमाइज एज रिसर्चर तो फिर रैंडमाइजेशन के इन टाइप्स को स्टडी करना जरूरी है. कंपैरिजन इज द सेकेंड स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्योंकि एक कंट्रोल ग्रुप है जिससे आप एक्सपोजर को कंपेयर कर सकते हैं, यानी एक्सपोज जिनको ड्रग मिला और वो लोग जिनको ड्रग नहीं बल्कि प्लेसिबो मिली, तो रिजल्ट्स को आप क्योंकि कंपेयर कर सकते हैं तो ये फिर एक रोबस्ट स्टडी बन जाती है. इंटरवेंशन अगेन जो रिसर्चर है वो खुद इंटरवीन कर रहा है, एक्सपेरिमेंट करके खुद ऑब्जर्व देख रहा है कि उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं ऑन द आउटकम. तो क्योंकि खुद वो इंटरवीन कर रहा है और एक्सपेरिमेंट करके खुद ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा रोबस्ट डिज़ाइन है एज कंपेयर टू द ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइंस, केस कंट्रोल कोहॉर्ट और द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज. Blinding क्या होती है? There are 3 types of blinding: single blind, double blind and ट्रिपल ब्लाइंड. सिंगल ब्लाइंड क्या होता है कि जब स्टडी पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता होता कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है या कंट्रोल ग्रुप में है. डबल ब्लाइंड होता है जब पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज दोज हु आर कलेक्टिंग द डेटा उनको नहीं पता होता कि ये डेटा किन का है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का है या कंट्रोल ग्रुप का है. एंड ट्रिपल ब्लाइंड जब इन एडिशन टू द सिंगल एंड द डबल ब्लाइंड जो डेटा एनालाइजर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स एनालाइज कर रहे होते हैं डेटा, उनको भी ये बात नहीं पता होती कि ये जो रिजल्ट्स हैं या जो एनालिसिस है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स का है या कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स का है. सो ब्लाइंडिंग से बायस्ड इज रूल्ड आउट.
लिमिटेशंस क्या है एक्सपेरिमेंटल स्टडी की? इट इज एक्सपेंसिव टू कंडक्ट। नेचुरली अगर कोई नए ड्रग को या वैक्सीन को आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फंड्स आर रिक्वायर्ड और एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर a problem in experimental design क्योंकि ये expensive studies होती हैं। Dropout rate is high due to side effects and switch therapy क्योंकि आप कोई नया ड्रग या वैक्सीन को टेस्ट कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा ड्यूरिंग द ट्रायल साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जो स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्टडी में से क्योंकि जो रिसर्च एथिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेंट्स के पास ये ऑटोनॉमी होती है कि वो जब चाहेंगे रिसर्च स्टडी को छोड़ के जा सकते हैं। एंड अगेन बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स एज्यूमिंग कि जी उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उस ड्रग से या उस थेरेपी से, तो वो या तो अपनी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की तरफ दोबारा आ जाते हैं या फिर सिंपली वो छोड़ देते हैं ट्रायल में पार्टिसिपेट करना। सो ड्रॉप आउट रेट हाई होता है साइड इफेक्ट्स की वजह से और स्विच थेरेपी की वजह से। एंड समटाइम्स ड्रॉप आउट रेट इसलिए भी होता है कि से क्लिनिकल ट्रायल जो 1 साल के लिए अगर रूटीन में उसने कल्मिनेट करना है आफ्टर 1 ईयर, तो ये भी हो सकता है कि जो स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं वो विलिंग ना हो पार्टिसिपेट करने के लिए एट सम पॉइंट इन टाइम, या वो रीलोकेट कर जाएं, उस जगह से चले जाएं, या अनफॉर्चुनेटली किसी पार्टिसिपेंट की डेथ हो जाए। सो जो सैंपल साइज होता है जब ट्रायल बिगिन किया जाता है और वो सैंपल साइज और एंड में जो सैंपल साइज रह जाता है उसमें फर्क होता है। देन देयर आर एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। एथिकल क्या कि अगर एक न्यू ड्रग आप टेस्ट कर रहे हैं एंड विद इन फ्यू वीक्स और फ्यू डेज आपको पता लग जाता है कि इट इज इफेक्टिव ड्रग और वो अगर लाइफ सेविंग ड्रग है तो फिर एथिकल इशू ये आता है कि those who are in the control group क्या उनको प्लेसिबो या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट पर ही रखा जाए या नहीं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में फिर क्योंकि आपने रिजल्ट्स को कंपेयर करना होता है तो अगेन जो प्लेसिबो ग्रुप है या जो कंट्रोल ग्रुप है वो सफ़र करता है। अगेन अगर कोई ऐसा अनयूजुअल साइड इफेक्ट आ जाता है तो फिर एथिकल इशू ये होता है कि क्या ट्रायल को कंटिन्यू करना चाहिए या ट्रायल को स्टॉप कर देना चाहिए। सो एथिकल इश्यूज आर इन्वॉल्व कि एक क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कि इनफैक्ट ये कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटल जो लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होते हैं उन्हें फेवर कर रही होती हैं और कुछ चीज़ें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जो कंट्रोल ग्रुप में होती हैं उनको फेवर कर रही होती हैं। सो लैक ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी, जो भी ट्रायल होता है वो उस स्टडी में उन पार्टिसिपेंट्स के लिए तो वैलिड होता है यानी इंटरनल वैलिडिटी होती है, लेकिन अगर वही ट्रायल उसी न्यू ड्रग के साथ किसी और पॉपुलेशन में किसी और प्लेस में या किसी और टाइम पीरियड में किया जाए तो वो रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सटर्नली वैलिड रिजल्ट्स हों। सो ट्रायल्स को डिफरेंट पॉपुलेशंस में और डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेसेस पे कंडक्ट होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन ट्रायल है, ज़रूरी नहीं है कि कोई वैक्सीन की अगर एफिकेसी किसी सर्टेन पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है तो वो किसी और जगह की पॉपुलेशन के अंदर भी उसकी एफिकेसी उतनी ही हो। क्रॉसओवर डिज़ाइन क्या होता है? अगेन इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जिसमें हर इंडिविजुअल अपना खुद कंट्रोल के तौर के ऊपर एक्ट करता है।
जिसकी वजह से जो कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं वो एड्रेस हो जाते हैं। किया कैसे जाता है? क्रॉस ओवर स्टडी में रैंडमली आप दो ग्रुप्स में असाइन करते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को आप थेरेपी ए देते हैं, जबकि ग्रुप 2 को थेरेपी दी जाती है। अगेन इस में क्रॉस ओवर डिजाइन का फायदा ये होता है कि दो थेरेपीज कुड बी टेस्टेड साइमल्टेनियसली। नाउ ग्रुप ए में थेरेपी ए का इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है, ग्रुप 2 में थेरेपी बी का इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है, और उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन वॉश आउट पीरियड, यानी से 1 महीना या 2 महीने ठहरने के बाद ग्रुप 1 को स्विच कर दिया जाता है ऑन थेरेपी बी, और ग्रुप 2 को स्विच कर दिया जाता है ऑन थेरेपी ए। और उसके बाद इन दोनों ग्रुप्स में अगेन ऑब्जर्व किया जाता है इफेक्ट ड्रग्स का। अब इसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये होता है, एक टर्म यूज की जाती है कैरी आउट इफेक्ट, यानी कि अगर से फॉर एग्जांपल थेरेपी ए का कुछ इफेक्ट जो है वो वॉश आउट पीरियड के बाद भी रह जाता है, या उसके कुछ इफेक्ट्स थेरेपी को बंद करने के बाद भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, तो जब ग्रुप 1 को थेरेपी 2 के ऊपर या थेरेपी बी के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, तो ये इफेक्ट्स मिक्स हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसको एड्रेस करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो वॉश आउट पीरियड है उसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन अगेन अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं तो फिर ये काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों जो थेरेपी ए है या थेरेपी बी है उन दोनों के जो इफेक्ट्स हैं वो मिक्सड अप हो जाए। सो क्रॉस ओवर स्टडी कंडक्ट की जाती है कि दो थेरेपीज को एक साथ साइमल्टेनियसली चेक करने के लिए लेस एक्सपेंसिव होती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन इसकी लिमिटेशन वही है कि जी कैरी आउट इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से थेरेपी के इफेक्ट्स मिस किए जा सकते हैं। स्ट्रेंथ ये होती है अगेन कि कंफाउंडिंग को आप एड्रेस करें, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने ही कंट्रोल के तौर पे एक्ट कर रहा है फॉर द टू थेरेपीज। फैक्टोरियल स्टडी डिजाइन क्या होता है? अगेन दो हाइपोथेसिस को एक साथ अगर आपने स्टडी करना हो, से आपका हाइपोथेसिस है टू मेजर द एसोसिएशन बिटवीन beta carotene and the occurrence of colon cancer, and to know the association between low dose aspirin and its effect on myocardial infarction, right? So किया क्या जाता है कि जो स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रैंडमली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। से फॉर एग्जांपल एस्पिरिन ग्रुप consisting of 11,000 say participants, again the placebo group which is the aspirin placebo, इनमें भी participants उतने ही हैं 11,000. The aspirin group is again divided into two groups, one receiving beta carotene and the other placebo of beta carotene. That is 5,500 participants in the beta carotene group and 5,500 participants in the placebo group. Similarly, जो aspirin placebo group है उसको again equally divide किया जाता है, those who would receive beta carotene and those who are going to receive the placebo of beta carotene. Now see, say if treatment B signifies beta carotene, that is beta carotene given and not given. Treatment A signifies aspirin, यानी aspirin दी गई और aspirin नहीं दी गई, right? So A cell में क्या हुआ, वो लोग who receive both
therapy A and B, that is aspirin and beta carotene. B group received only aspirin, C group received only beta carotene, and the D group received neither aspirin nor beta carotene. The effects of both A and B interventions must be mutually exclusive. That is, aspirin is given tested for its role in prevention of heart attack, and beta carotene is tested for its role in prevention of colon cancer. And aspirin का कोई रोल नहीं है in the prevention of colon cancer में, and beta carotene का कोई रोल नहीं है in the prevention of heart attack में. So जो दो आप hypothesis टेस्ट कर रहे हैं वो mutually exclusive होने चाहिए of each other. Now अब आप देखें कि जो कंट्रोल और कंपैरिजन ग्रुप्स हैं फॉर एस्पिरिन आर द वंस हु डिडंट रिसीव एस्पिरिन, राइट. अब से फॉर एग्जांपल जो अबव टू ग्रुप्स हैं, दैट इज द सेल ए एंड बी, उसमें वो लोग हैं ए सेल में जिन्होंने बोथ ए एंड बी रिसीव की, यानी एस्पिरिन एंड बीटा कैरोटीन, जबकि जो बी ग्रुप है उनको एस्पिरिन सिर्फ मिली. तो एस्पिरिन के लिए जो कंपैरिजन या कंट्रोल ग्रुप होगा वो सी ग्रुप होगा, दैट इज वो लोग जिनको सिर्फ बीटा कैरोटीन मिली है, या वो ग्रुप जिनको नाइदर ए नॉर बी, यानी ना एस्पिरिन मिली है ना बीटा कैरोटीन मिली है. सो ये जो दो सेल्स हैं C प्लस D, ये कंट्रोल ग्रुप के कंट्रोल ग्रुप एक्ट करेगा फॉर द एस्पिरिन ग्रुप, यानी A प्लस B के लिए जो कंट्रोल ग्रुप होगा वो होगा C प्लस D, दैट इज द कंपैरिजन ग्रुप. उसी तरह say control or comparison groups for beta carotene are the ones who didn't receive beta carotene, right. say आप देखें कि जी जो सेल A है उनमें वो इंडिविजुअल्स हैं जिनको A and B एस्पिरिन और बीटा कैरोटीन मिले, जबकि सेल C जो है वो लोग हैं जिनको बीटा कैरोटीन मिली. अब इस बीटा कैरोटीन के लिए जो कंट्रोल या कंपैरिजन ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा जिनको बीटा कैरोटीन नहीं मिली, दैट इज those who received aspirin only, that is the cell B, and those who received neither aspirin nor beta carotene, which is cell D. So A plus C के लिए जो comparison group है वो है B plus D. Now ways to express the results of RCCT and RCFT. अब results को कैसे express किया जाएगा? The risk, that is the incidence of death, disease, complication, that is no complication or no specific complication. अगर आप outcome देख रहे हैं कि कोई एक particular specific complication हो रही है या नहीं हो रही, in both groups could be calculated, यानी आप risk को calculate करें, incidence को calculate करें, और उसके बाद efficacy of the drug, vaccine या procedure, जो experimental drug, vaccine या procedure है उसकी efficacy को calculate करें. efficacy का मतलब होता है reduction in the risk, right? So efficacy of the vaccine कैसे calculate करेंगे? This shows the extent of reduction in the risk of the disease by the use of the vaccine. Formula क्या है? Denominator, rate of disease in those who receive the placebo, right? Numerator क्या है? Rate of disease in those who receive placebo minus rate of disease in those who received the experimental vaccine multiplied by 100. Now, suppose the rate of disease in placebo group is 80%, right?
and the rate of disease in vaccinated group is 20%, right? So first convert the rate, that is the percent, into proportion. So efficacy of the vaccine is equal to 80% minus 20% divided by 80%, which is equal to, जब proportion में change किया, 0.80 minus 0.20 divided by 0.80, which is equal to 0.60 divided by 0.80, which is equal to 0.75, और जब उसको reconvert करेंगे percent में या rate में, तो वो 75% हो जाएगा. Interpretation क्या है? Out of 100 who receive the placebo, यानी 75% का मतलब है 75 out of 100. 100 कौन से वो लोग हैं जो denominator में है, that is out of 100 who receive the placebo, disease will occur in 75, and this risk could be reduced by vaccine administration. Meaning that KG out of 100 जिनको कोई वैक्सीन नहीं मिली, अनवैक्सीनेटेड हो रहे, उनमें से 75 को डिजीज हो जाएगी वैक्सीन ना लगने की वजह से, और इस रिस्क को या इस इंसिडेंस को आप रिड्यूस कर सकते थे बाय the administration of the vaccine. So efficacy of the vaccine is 75%. Now, efficacy of the drug क्या है? This shows the extent of improvement, cure of disease, or no complication, or no specific complication by the use of the experimental drug or the procedure. So formula क्या है? Rate of improvement, cure, no complication or no specific complication in those who receive the experimental drug, और इनमें से numerator क्या होगा? Rate of cure, improvement, no complication or no specific complication who got the experimental drug minus the rate of cure or improvement or no complication or no specific complication who got the placebo multiplied by 100. So suppose the rate of cure, improvement, or no complication or no specific complication is 70% in those who receive the experimental drug, and it is 30% in those who receive the standard drug, right? So convert the percent into the proportion. Efficacy of the drug is equal to 70% minus 30% divided by 70% is equal to 0.70 minus 0.30 divided by 0.70, which is equal to 0.40 divided by 0.70 equal to 0.57, which is 57%. So interpretation would be, out of 100 patients who received the experimental drug, that is the denominator is 100 patients who received the experimental drug, 57 got cured or improved or suffered from no complications or no specific complication of the disease. Meaning that कि 57% जो हैं उनमें improvement आई है, या disease cure हो गई है, या कोई complications नहीं हुए, या कोई specific complication नहीं हुई. Again, और किस तरह से आप रिजल्ट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स और फील्ड ट्रायल्स के, बाय कैलकुलेटिंग द रिलेटिव रिस्क, व्हिच इज रेशियो ऑफ द रिस्क, दैट इज द इंसिडेंस ऑफ डेथ, कॉम्प्लिकेशन, डिसेबिलिटी in both the groups, that is the experimental and the control group. Relative risk क्या होता है? Incidence in the exposed divided by the incidence in the non-exposed. So the denominator would be incidence of death, complication, disability or deterioration in the control group.
जबकि न्यूमरेटर है इंसिडेंस ऑफ डेथ, कॉम्प्लिकेशन, डिसेबिलिटी और डिटीरियोरेशन इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. सपोज relative risk आपने कैलकुलेट किया बाय द फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय a plus b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय c plus d which is equal to a divided by a plus b multiplied by c plus d over c और वो आता है 0.5 which means 0.5 over 1 which is simply 0.5. इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? The incidence or the risk of death, complication, disability, deterioration, or reduced survival, say for example less than 5 years in experimental drug or the procedure group is half, that is 0.5. Group is half the risk of death, complication, or disability or deterioration in the control or the placebo standard drug or procedure group. क्योंकि ये RR जो है that is less than 1 which is 0.5, इसलिए जो risk है वो half हो गया. से अगर यही relative risk आपका instead of 0.5 greater than 1 आता, से 5 आ जाता, तो इसको कैसे interpret करते? If the incidence of, say for example, डेथ है या कोई कॉम्प्लिकेशन है, जो भी आउटकम आप मेजर कर रहे हैं, डिसेबिलिटी है या फर्दर डिटीरियोरेशन इन कंडीशन है पेशेंट की, या रिड्यूस सर्वाइवल है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग ग्रुप है उसमें 5 टाइम्स हायर है देन इन द कंट्रोल ग्रुप. यानी आपका जो न्यू ड्रग है या एक्सपेरिमेंटल ड्रग है वो इफेक्टिव नहीं है. So this is how you interpret relative risk in RCCTs and RCFTs. Now another way, results कैसे calculate करते हैं? You observe survival curves in both the experimental and control group. यानी कि experimental और control group में आप देखते हैं कि mortality patterns क्या हैं, जिनको experimental drug मिला से उनमें 2 year survival rate experimental group में कितना है और control group में कितना है, जिनको standard treatment दी गई, और इन curves को आप compare कर सकते हैं. Another thing which is calculated is NNT, which is number of patients who are required to be treated to prevent one adverse outcome, that is one death. और इसका formula क्या है? 1 divided by mortality rate in standard treatment group, that is the experimental group, and the mortality rate in standard treatment group, that is the placebo or the conventional control group, minus mortality rate in experimental treatment group जिसमें new drug या therapy दी गई. So again, you first convert the percent into the proportion. Say for example, जो mortality rate कंट्रोल ग्रुप में 17% था और मोर्टेलिटी रेट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 12% है, तो 1 divided by 17% minus 12% is equal to 1 divided by 0.17 minus 0.12, which is 1 over 0.05, which is equal to 20. अब इंटरप्रेट कैसे करेंगे? Now 20 people need to be treated to prevent one death. Estimates of entity are rounded to the next highest whole number. यानी अगर fraction में जवाब आ जाए, जैसे 20 के बजाय 20.5 या 6 होता, तो वो 21 count होता. Entity helps physicians in estimating the effect they might expect to observe by using the new therapy or preventive measure in their practices. So
एंटिटी कैलकुलेट करना फिजिशियंस और क्लिनिशियंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि कितने पेशेंट्स को वो ट्रीट करेंगे तो एक एडवर्स आउटकम को वो प्रिवेंट करेंगे. NNT can be used in studies of various interventions including both RCCT यानी ड्रग ट्रायल है या कोई प्रोसीजर ट्रायल है एंड RCFTs में यानी वैक्सीन ट्रायल है या कोई प्रिवेंटिव मेजर ट्रायल है. दोनों में NNT कैलकुलेट किया जाता है. So now the assignment. In a RCCT, it was found that death was delayed for 2 years in 70 out of 200 patients who received a new cancer drug. In the standard treatment group of 500 patients, death was delayed in 20 patients for the same period. Make a 2x2 contingency table, label it, calculate relative risk or the risk ratio, and interpret your result. Thank you.